Speaker of Lok Sabha, Mr. Om Birla, has in fact taken to his chair, and also the Rajya Sabha session has started. And we are expecting that the situation in Manipur is going to be beginning the proceedings in both the houses of the parliament. Remember, a two-day visit was undertaken by the India delegation, member delegation of MPs of the opposition who visited the state of Manipur. There was deliberations that had happened in a meeting that was carried forward after their return from Manipur, and they were chalking out strategy as to how they are going to be taking the proceedings in both the houses forward, and also asked the centre to respond on questions, the important questions on Manipur. Remember, there's also a need to send out an all-party delegation to Manipur. That is a suggestion that's been made by the governor of the state, and this suggestion also will be brought to fore. You can see Jagdeep Thankar has also taken the chair in Rajya Sabha, and right now the proceedings, both Lok Sabha and Rajya Sabha, are currently underway. One important aspect that is also a side of Manipur is the ordinance on the Delhi services. That bill is going to be now presented by the centre. However, we are given to understand that that discussion is not going to take place today as far as the Lok Sabha is concerned. So that also is going to be beginning and in fact leading to a little bit of sparring between the government and the opposition. But right now the forefront of the discussions would begin with the Manipur crisis. Remember, there was an opposition key meet that happened just a short while back, where after getting back from Manipur, they were discussing as to what the ground situation really is, what are the questions that need to be presented to the centre, as to what is the kind of prompt action that needs to be taken on the situation, the chaos that continues to persist in Manipur after over 89 days. This is what we are given to understand. You can see both the houses are currently, they have started the monsoon session after the weekend break, and we are expecting that this becomes an important part of the discussion when it is both the Rajya Sabha and the Lok Sabha. In the chair in Lok Sabha is the Honourable Speaker, Mr. Om Birla. In the Rajya Sabha, you can see the Rajya Sabha chairperson and Vice President, Mr. Jagdeep Thankar, both of them taking forward the proceedings. Remember, there is a lot of back and forth that has happened vis-a-vis the Prime Minister speaking in the floor of the Assembly, where there is ample cornering that the opposition is doing as far as the government is concerned. There is also a no confidence motion that has been accepted by the Lok Sabha Speaker, Mr. Om Birla, and whether or not that discussion happens today or at a later date, it's also something that we'd have our eyes on. Let's actually take a look at what's happening in the lower house of the parliament. और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप अप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है, लेकिन शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है, न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम फ्री स्कूल की 6,207 स्कूल को पहला किस्त की भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। अन्य अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज ये सब बनते हैं। लेकिन हमने देखा हमेशा, ये जो लिस्ट हमको मिली है सर, इसमें 12 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और वो सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो भारत सरकार का मापदंड 112 है। और वो सारे के सारे जिले 6 संथाल परगना के हैं, एक जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा जी, उनका क्षेत्र है जो हमसे सटा हुआ है, और गिरिडीह है। तो 12 जिले में से झारखंड के 8 जिले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और उसके इर्द गिर्द हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रभावी होने के कारण वो रांची जैसे जगह में बन जाता है या राज्य की राजधानियों में बन जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह भी है और यह प्रश्न भी है कि क्या आप इस लिस्ट को देखते हुए संथाल परगना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इकाई या जो रांची विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका एक कैंपस खोलेंगे, जिससे कि हम अपने तरफ से जो है शिक्षा को बढ़ावा दे पाए। अध्यक्ष महोदय, अभी फिर मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, ये यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल करने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यों की एक प्रमुख जिम्मेवारी है। लेकिन मैं आदरणीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा, अभी जो नया PM उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान, when the government has already acceded to the sense of the house that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the house. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? इनकी दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। माननीय सदस्यगण, फिलहाल एक ही मुद्दा है, क्या मैं सब माननीय सदस्यगण का नाम पढ़ूं या मैं विषय पढ़ूं? Honorable members, honorable member, honorable members, one second. One second. Please. Honorable members, the importance of listed business of the House can never be overstated. Many of you have reflected on this time and again. In democracy, this is the highest platform enabling representatives of people to secure response from the government, thereby effecting accountability and transparency. Suspension of the business of the House that has been listed has to be effected in rarest of rare cases. Rule 267, Rule 267 came to be invoked last occasion 5 years ago in 2018.